We begin today's session with an oath or affirmation of our newly elected members. Secretary General, please. Ms. Prisha Lachotra, who stands elected from Srinagar constituency of Jammu and Kashmir state, will now take an oath or an affirmation. Ms. Prisha Lachotra, please. Do you want to take an oath or an affirmation? Oath, please. In which language do you want to take an oath? In English, please. I, Prisha Lachotra, having been elected as a member of the lower house of the Youth Parliament, do hereby swear of the name of God that I will bear to faith, much alike to the Constitution of India, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duties which I am about to enter. Ms. Akshara Sharma, who stands elected from Jammu constituency of Jammu and Kashmir state, will now take an oath or an affirmation. Ms. Akshara Sharma, please. Do you want to take an oath or an affirmation? An oath, please. In which language do you want to take an oath? In Hindi. मैं अक्षरा शर्मा युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान पर अपनी श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता एवं एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। Great sorrow and regret, I inform this House about the sad demise of our brave soldiers. Colonel Manpreet Singh, DSP Humayun Bhatt, Major Ashish Tone, and Rifleman Ravi Kumar, who martyred in the district Anantnag, Jammu and Kashmir, for the sake of our Mother India. Today, all we together pay tribute to them and pray God to rest their pure souls in peace and bless power to their family to bear this unbearable loss. Prime Minister, please. Honorable Speaker, मैं हिंदुस्तान संसद में कर्नल मनप्रीत सिंह और दूसरे जवानों को याद करता हूँ। कर्नल सिंह का ताल्लुक मोहाली से था। कर्नल सिंह जम्मू व कश्मीर के जिला अनंतनाग में हुई दुर्घटना में शहीद हुए। हम उनकी हिम्मत और कुर्बानी को सलाम करते हैं। मेजर आशीष दोनाय व सुप्रिंटेंडेंट हुमायूं भट्ट भी इस दुर्घटना का शिकार हुए और अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। हम उनकी यादों को अमर करने में काबिल हैं। उनके परिवारों के लिए हमारे दिल में हमदर्दी है। उनकी याद में हम अपना सर झुकाते हैं और दुआ करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति देगा। उनकी बहादुरी और कुर्बानी को हम सदा याद रखेंगे। उन्होंने हिम्मत और ताकत की एक मिसाल दी है और मैं गर्व से कहता हूँ हमारे कौमी दिलों में उनकी याद सदा चलती रहेगी। दिल से सलाम है उनके जज्बातों को उनकी कुर्बानी का लिया जाएगा बराबर इंतकाम। जो जान की है उन्होंने देश के नाम, जो जान की है उन्होंने वतन के नाम, मरते दम तक दिया हुब्बे वतन का पैगाम। Honorable Opposition Party, please. जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। Respected Speaker, I associate myself and my party members with the loss and feel the void that the nation feels at the sad demise of the three soldiers. Colonel Manpreet Singh, Major Ashish Tone, and Deputy SP Humayun Bhatt were martyred during an anti-terror operation in South Kashmir, Anantnag district. Colonel Singh was commanding the 19th Russia Rifles Unit. All three were part of a joint operation by Army and J&K Police. In Gadul Forest in Anantnag on the antimony night of 12 and 13 September. On 30 September morning, the force came under heavy fire from terrorists
who had positioned themselves at vantage points and took cover behind a thick foliage at the Gadul hamlet. The three commandos came under the first volley of indiscriminate fire opened by the terrorists were critically injured. They sacrificed their life for the protection of the nation's pride. Every soldier is a true patriot and is always ready to lay down his life in the service of motherland. Our nation's protection and safety are totally dependent on our soldiers. ये जो थोड़ा तुम्हें सुकून है, ये जो थोड़ा तुम्हें सुकून है, इसके पीछे वर्दी वालों का खून है. Thank you. The House are wild to express our deep sorrow. You may all sit now. Secretary General, message of condolences to the bereaved family. Yes, madam. Prime Minister to introduce new members. Honorable Speaker, I want to introduce the new ministers, our cabinet ministers, our colleagues to the House. Mr. Ankit Sharma, Ministry of Human Resource Development. Now, Ms. Sanvi Sharma, Ministry of Agriculture. Ms. Mayor of Railways. Mr. Tulse, Ministry of Education. Ms. Aditi Sharma, Ministry of Skill Development. Thank you. Now we begin with the question hour. Question number 101, Honorable Leader of Opposition Party, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मानव संसाधन विकास मंत्री ये बताने का कष्ट करेंगे कि भारत में कितनी प्रतिशत महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं तथा सरकार की ओर से इस संदर्भ में क्या नई योजनाएं एवं सुनिश्चित किए गए हैं? Honorable Minister of Human Resource Development, please. हाँ सर, आपके पहले प्रश्न के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी सरकार ने भारत की जो 10% महिला विद्यार्थी थी उनकी संख्या को बढ़ाया है, जिस कारण आज भारत में वुमेन महिलाओं का दाखिला 44% हो चुका है, जिसमें गोवा ने टॉप किया है 62.3% के साथ और केरला 58.6% के साथ दूसरे नंबर पर विराजमान है। कृपया फाइलों से बाहर है मैडम। मैं सदन में बैठे अपने साथियों का ध्यान एक बात पर आकर्षित कराना चाहता हूँ, जहाँ पहले दूर दराज से आए लोग कहा करते थे सरकार तो हमें भूल चुकी है, सरकार तो हम पर ध्यान ही नहीं दे रही। मैडम स्पीकर, मैं इन्हें बताना चाहूँगा, आज वही दूर दराज के इलाके एक राज्य मेघालय से आए हुए लोग जब ये बात कहते हैं उन्हें खुशी होती है, क्योंकि उन्हें पता है हमारी सरकार ने उनके लिए क्या किया है। आज उनके पास उच्च शिक्षा है, उच्च रोजगार है, जिस कारण वहाँ पे वुमेन एनरोलमेंट रेशियो 51.3% हो चुका है, जो कि यह दर्शाता है कि हमारी सरकार द्वारा लागू की गई पॉलिसीज अपना कार्य कर रही हैं। और आपके दूसरे प्रश्न के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने 1961-1962 में एक स्कीम लाई थी, स्कॉलरशिप स्कीम, जो कि उन विद्यार्थियों के लिए थी जो अभी फ्रेशर्स हैं, जिनमें 82,000 फ्रेशर्स थे और 41,000 महिलाएं थी, और उसके बाद इसे लागू किया गया, जिसके लिए उन्होंने परीक्षा भी चलाई और उनके बाद उन्हें स्कॉलरशिप दी गई। और हमारी सरकार ने एक बजट पास किया था 1000 करोड़ का, जिसमें यह था हमारी सरकार उनके लिए 1000 करोड़ की स्कॉलरशिप स्कीम लाई थी, जिससे वो उच्च शिक्षा का लाभ ले सकें। और आज भी आप कहते हैं, अपोजिशन कहती है कि सरकार ने क्या किया। Question number 102, Honorable Member of Opposition Party, Mr. Harish, please. अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूँ कि खाद्य एवं कृषि मंत्री इस तथ्य से अवगत है कि प्याज के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो रही है तथा प्याज का मूल्य 40-50 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गया है। यदि हाँ तो
यदि हाँ तो सरकार प्याज की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या कर रही है? क्या सरकार प्याज की निर्यात पर रोक लगाने का विचार कर रही है? महंगाई को देखकर दुख में सकल समाज, निर्भर जन जीना कठिन, कैसे सादे काज, कहाँ से लाए राशन, महंगाई रही पकेगा प्याज कैसे सालन। अध्यक्ष महोदय, प्याज के मूल्यों में हो रही वृद्धि की जानकारी सरकार को है। प्याज की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार कई प्रकार के उपाय कर रही है। दिल्ली सरकार ने आगे बढ़कर इस वर्ष सरकारी स्टॉलों पर प्याज बेचने का निर्णय किया है। मैं सदन में बैठे सभी लोगों को ये भी सूचित करना चाहती हूँ कि इस वर्ष महाराष्ट्र एवं देश के अन्य भागों में प्याज की बम्पर पैदावार होने की संभावना है, जिससे कि प्याज की कीमतों में अधिक गिरावट देखी जाएगी। सरकार पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से प्याज के अदाए पर विचार भी कर रही है। माननीय वक्ता, मैम, क्या माननीय रेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि देश की जनता के लिए रेलवे में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में सरकार ने क्या व्यवस्था की है? ऑनरेबल स्पीकर, हमारी हुकूमत को इस मामले पर इंतहाई तशवीश है। 200 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन स्कीम के तहत लाया गया और उनकी कुछ खास जरूरियात को पूरा किया गया, जैसे कि स्टेशनों पर वेटिंग रूम्स बनाए गए, स्टेशनों पर पीने का पानी लाया गया और स्टेशनों पर टॉयलेट्स भी बनाए गए। 600 स्टेशनों को नए टॉयलेट्स मिल रहे हैं, 17,000 पुराने ट्रेनों में नए टॉयलेट्स बन रहे हैं और इससे तादाद में 17,368 का इजाफा हो रहा है। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत ट्रेनों और स्टेशनों को साफ रखने के लिए सफाई कर्मचारियों की हिदायत भी हासिल हो रही है। मैम, रेलवे में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। सरकार सुरक्षा के सुधार के लिए क्या कर रही है, खासकर ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए? ऑनरेबल स्पीकर, इस मामले हुकूमत ने हेल्पलाइन नंबर 182 और 138 भी फराहम किया है और 400 रेलवे स्टेशन सीसीटीवी कैमरों की खिदमत भी हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रेनों में पिंक जोन भी है, जो सिर्फ ख्वातीन के लिए मखसूस है, ख्वातीन की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए। Yes, ma'am. Ma'am, the black marketing of reserved air ticket is another serious matter. The government has to ensure stopping this. Honorable Minister of Railways, please. ऑनरेबल स्पीकर, इस मामले में हमने यात्री टिकट सुविधा केंद्र के नाम से एक पहल शुरू की है ताकि रेल में हुए रिजर्व रेल टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके। इसके अलावा मुसाफिरों को 120 दिन पहले तक के टिकट बुक करने की इजाज़त देता है। उनकी आमद और रवानगी के लिए SMS अलर्ट भी मौजूद है। इसके अलावा हमारी हुकूमत ने 5 मिनट ऑपरेशन भी शुरू किया है, जो मुसाफिरों को ट्रेन में दाखिल होने के बाद ही 5 मिनट के अंदर ही उनको टिकट हासिल करने की इजाज़त देता है। Number 104, Honorable Member of Opposition Party, Mr. Ram. Honorable Speaker, will the Ministers of Irrigation be pleased to state that out of 141 million hectare of net zone area, only an extent of 65 million hectare, that 46% is currently covered under irrigation. Substantial dependence on the rainfall make agriculture in remaining area a high risk and less productive profession. When the government is busy in favoring the industrialists, what are they doing for the helpless farmer to improve irrigation? The Minister of Irrigation, please. Honorable Speaker, I would like to inform my honorable opposition that the government is committed according to high priority to water security. Madam, we conceived a Parliamentary Krishi Sinchai Yojana in order to extend the coverage of irrigation in a focused and comprehensive manner. मैडम, ये तो बात रही आज तक की, हमने क्या नहीं किया। इसके अलावा आप 2019-20 की बजट स्पीच उठा के देखिए, उसमें हमने 1000 करोड़ रुपए जरूरत से वाबस्ता मुख्तलिफ शोबों की तरक्की के लिए सर्व किए। शायद हमारी मेहमान साहिबा को खबरों से ज्यादा स्टार प्लस का शौक है, इसलिए उन्हें इस चीज का इल्म नहीं है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है।
हाल ही में हमने एक मीटिंग तलब की थी जिसमें यह तय हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को नोबल डिपार्टमेंट करार दिया जाएगा ताकि हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू कर सकें। Honorable Speaker, I want to say something. Yes, Mr. Nitin. Honorable Speaker, there has been a serious breach of privilege by the members of the ruling party. Days before, a serious and confidential issue relating to the foreign policy towards its neighboring countries was discussed, which later was leaked into media and now has become a chaotic debate. Honorable Speaker, before the side puts forth any of their developmental projects or increments in GDP, let them get to know about the rules, regulations, norms, discipline and decorum of the parliament. And let them not make the people ashamed of whom they choose to be their representative. Mr. Nitin, have you given notice of it earlier? Yes, ma'am, I have already given notice of it at 10 a.m. earlier. Thank you. It will be examined and you will come to know about it. Thank you. Now it's to be late. Honorable Minister of Renewable Energy, please. Ma'am, I beg to lay on the table copy of the paper slated to report by identification of industrial sector promising for commercialization of solar energy, market assessment of solar water heating in the Himalayan region, Delhi International Renewable Energy Conference. Please collect the paper. Honorable Minister of Human Resource Development, please. Honorable Speaker, Prime Minister, Excellencies, distinguished member of the Parliament, ma'am, with your permission, I would like to lay down following reports. Report of working group, report on technological mission, report on oilseed and pulses, report on integrated nutrients. It is genuine to report message from upper chamber of the Youth Parliament. Madam, I have to report the following message received from the Secretary of the Upper Chamber of the Youth Parliament. Is that the bill for the regulation of sports bodies 2021, which the government passed in the last year, has been rectified and is ready to be sent for the President's approval. Honorable members, I have to make an important announcement on my own behalf and on behalf of honorable members of the House. I have great pleasure in extending my hearty and warm welcome to the foreign delegations, British Parliamentary delegation, who are on a visit to India as our honored guest. It is very high-powered delegation. The delegation arrived on 24th September 2023. They seated in the special box. We wish them a happy and comfortable stay in our country. Now calling attention motion. Ms. Dipali, please. अध्यक्ष महोदय जी, क्या कृषि मंत्री मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे कि आखिर क्यों इनकी पारित की हुई जमीन आदि ग्रामीण में रूरल डेवलपमेंट को कॉन्स्टेंस क्लास के द्वारा अनिवार्य नहीं किया गया है? जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि लापरवाहियों का खामियाजा गरीब किसान अपनी आन देकर भुगत रहे हैं। और क्यों ये सूट-बूट की सरकार उद्योगपतियों की हितों को राष्ट्रीय हित से ज्यादा महत्व दे रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही दुखद समाचार के साथ खड़ी हूँ। महोदय, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही दुखद समाचार के साथ खड़ी हूँ कि हमारे देश के एक किसान भाई ने चंद ही दिनों पहले आत्महत्या करके अपनी जान ली। और इसके पीछे का कारण ये ऑपोजिशन पार्टी है जो उन्हें हमारे ऑनरेबल स्पीकर, मैं आपके जरिए ऑपोजिशन पार्टी तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि ये प्रोविजन किसानों के हक में है। इसमें जो किसान पूरी तरह से जमीन पर डिपेंड थे और उनकी जमीनों का नुकसान होने पर जो उन्होंने लोन लिए थे वो पूरी तरह से माफ कर दिए। महोदय जी, ये रूलिंग पार्टी सिर्फ झूठे वादे करती है। ऑनरेबल स्पीकर, क्या ऑपोजिशन पार्टी
किया। ये सरकार महज कुर्सियों पे आराम और तकरीरों में बड़े बड़े वादे करती है। ये सरकार लोगों के इमोशन से खिलवाड़ करती है। ऑनरेबल स्पीकर, इस सरकार ने आज तक ना एजुकेशन पे, ना डिफेंस पे और ना ही एग्रीकल्चर पे कोई काम किया। मैडम, we demand a motion of non-confidence to be granted. Motion moved. Those who are in favor of government, please say aye. Those against the government, please say nay. We have 51 ratio 49, and I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Honorable Prime Minister, please. ऑनरेबल स्पीकर, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पार्टी मेंबर्स का, उन लोगों का, उस हर एक इंसान का जिसने मुझ में विश्वास दिखाया, मुझ में यकीन रखा। मैं वादा करता हूँ कि उनका दिखाया गया यकीन, उनका दिखाया गया विश्वास खाली नहीं जाएगा। मैं वादा करता हूँ मैं वो हर एक काम करूंगा जिसका मैंने वादा किया है। मैं अपने अपोजिशन मेंबरान से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो हर एक मुद्दे को जो है पॉलिटिसाइज ना करें। Let's not paint every issue with the brush of politics because this will not be good for our mother India. इसके बाद मैं अपने मुल्क की आवाम से गुजारिश करना चाहूंगा कि मुल्क की आवाम जाग जाए, जागरूक हो जाए, वो सही गलत में फर्क देख पाए, वो उसको पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। क्यों ना कि जिस मुल्क की आवाम जागी होती है, जिस कौम के लोग जागे होते हैं, जिस कौम के लोगों को सही और गलत में फर्क पता होता है, वो कौम आगे बढ़ती है, उस मुल्क की तरक्की होती है, वो मुल्क आगे उभरता है। और वही जो मुल्क, जिस मुल्क के लोग सोए होते हैं, जिस मुल्क के लोग जिम्मेदार नहीं होते, उस मुल्क की मौत बेवक्त हो जाती है। मैं वादा करता हूं कि जब तक मैं अपने मुल्क का अमन का सुकून वापस नहीं लाऊंगा, मैं खाली नहीं बैठूंगा। I do acknowledge the fact that there had some loopholes in our governance, but still we represent the nation. We have been working and we will be working for the development of the country as much as possible, and we will be the witness of the peaceful, beautiful and the progress of all above nations. Honorable Speaker, good morning to one and all present here. I am Aditi, feeling blessed to get this opportunity in front of you to put a light on the features of national education policy. The national education policy, once drawn up in the year 2020, it replaces the previously existing one from 1986 for better quality of education as demanded by the Government of India. The National Education Policy 2019 envisioned an India centered by transforming our nation sustainably, equitably and vibrant knowledge by providing high quality education to all. The first feature of National Education Policy is to strengthening early childhood care and education. Significant expansion and strengthening of facilities for early childhood will happen through a multi-pronged contingent on local needs, geography and existing infrastructure. Designer of learner-friendly environment for the high-quality educators for early childhood through state-specific training, mentoring, career mapping will also be undertaken. Honorable Speaker, demand will be generated from stakeholders through large-scale advocacy and wide-scale disseminations of information to the parents to actively support their children's learning need. The Right to Education Act of 2009 will be extended to assure availability and free compulsory education for all the 3 to 6 year olds. The second feature of National Education Policy is to ensure foundational numeracy and literacy. By 2025, every children in grade 5 and beyond has achieved foundational literacy
introduced to primary and pre-primary and primary school students. Expenditure of the program will be linked on the food cost and information to the quality of food served. All the grade 1 students will go through a long school preparation module. Teachers' education will be redesigned to have a renewed emphasis on foundational literacy and numeracy. Honorable Speaker, the third feature of national education policy is to ensure universal access to find our intention in education at all levels. Achieve access and participation in free and compulsory education for all children in the age group to 3 and 18 years by 2030. 100% gross enrollment ratio in preschool through secondary school by 2020 is to be met through various measures. In case of students being unable to come to school due to some health issues, they return to school as soon as possible. We include health workers in school, generating awareness among students, parents, community at large, and connecting them to appropriate health services. Vocational education is required. This will be an integral part of all education. This policy aims to provide access to vocational education to at least 50% of all learners by 2025. Adults education. The policy aims to achieve 100% of youth and adult literacy by 2030. Financing education. There will be substantial public investment to expand and vitalize public education. Rashtriya Shiksha Ayog will be formed by a Prime Minister. This will be the custodian of the vision of education in India. Without consuming your precious moment, I would request my colleague Mr. Anshul to put a light on the remaining features of the national education policy. Honorable Speaker, a good education is a foundation for a better future. First of all, I would like to thank my colleague Ms. Aditi to bless me with a chance to take part in presenting the features of national education policy. Esteemed speakers and all the members of Youth Parliament present here, a very warm good morning to all of you. Let me get going to continue highlighting the features of national education policy. Some of the features have already been discussed by my colleague Ms. Aditi. The fifth feature of the national education policy is teachers, torchbearers of change, with an objective to ensure that all students at all levels of school education are taught by passionate, motivating, highly qualified, professionally trained and well-equipped teachers. This policy envisages teachers as the most important members of our society and the torchbearers of change. The success of any efforts refers to the foster quality education is dependent upon the quality of teacher. Merit-based scholarships will be instituted to enable outstanding students from rural or tribal areas to undertake the 4-year BE.Ed program. Requirement of teachers will be done through a robust process based on comprehensive teachers' requirement, planning at school with preference given to local teachers and those who are fluent in local language. The practice of para teachers, that is qualified or contract teachers, will be stopped across the country by 2022. Honorable Speaker, big feature number 6, equitable and inclusive education for every child in the country. This policy aims to shape an education system that benefits all India's children so that no child lose any opportunity to learn and excel because of the circumstances of birth or death. The policy is to achieve an inclusive and equitable education system so that all children have equal opportunity to learn, so that participation and learning outcomes are equalized across all genders and social categories by 2020. Honorable Speaker, policy actions related to early childhood education, foundation literacy and numeracy school access.
Special education zones will be set up in disadvantaged regions across the country. States will be encouraged to declare these zones based on clear social development and socio-economic indicators. Some key initiatives are the chemistry development of teachers, sensitizing them, creating alternate pathways for requirement of teachers from educationally underrepresented groups. Honorable Speaker, with feature number 7, governance in school education through school complexes. The objective of this policy is that all schools are grouped into school complexes to facilitate the sharing of resources and render school governance more local, effective and efficient. The establishment of school complexes will aid in mitigating many resource crunch problems that public schools, particularly small schools, currently face. Honorable Speaker, state government will group into complexes according to population distribution, connectivity and other local considerations by 2023. School complexes will break the isolation of small schools and create a community of teachers and principals who can work together and support each other. Last and the eighth feature of national education policy is regulation of school education, whose objective is India's school education system is invigorated through effective regulation and accreditation mechanisms. Regulation must become an engine of educational empowerment and energize India's school education system. Regulation and operation eliminate conflicts of interest. An independent state-wide regulatory body called the State School Regulatory Authority will be created for each state. Private and public schools will be regulated on the basis of same criteria, benchmarks and processes. Honorable Speaker, education is the manifestation of the perfection already existing in a man. Thank you. जिस तरीके से यहाँ संसद में एजुकेशन की बात चल रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस हो रही है, एक मुल्क के अंदर एजुकेशन की क्या बुनियाद होनी चाहिए और इसके क्या फायदे होते हैं, उसके ऊपर मैंने कुछ मिसरे लिखे हैं, इजाजत हो तो मैं बोलना चाहूंगा। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दोनों मौजूद के दिलों रात बदल सकते हैं। वो बदले या ना बदले यारो, अगर तुम बदल जाओ तो मुल्क के हालात बदल सकते हैं। Now it's time to introduce legislative bill. Honorable Home Minister Ms. Angel Sharma, please. Thank you, Speaker ma'am. A very good morning to all of you. I want to introduce a new bill in the Parliament. This bill is regarding to the women's reservation. The bill Nari Shakti Vandan Abhinayam or the women's reservation bill proposes 33% of the reservation for women in Lok Sabha and the national and state capital territory of Delhi. Similar reservation will be there with the reservation for SC and ST in the Parliament. It will enable a greater portion of women in making policy in state and national level. It will help to achieve the goal of making India a developed country by human rights and women rights. And among those rights, there was right to speak freely. And the right must be heard. The implementation of this bill will be start of a new era. This bill improves the lives of the women, their families, communities and ultimately the nation. Any delay in the implementation of this bill will be a gross injustice to our Indian women. The implementation of this bill by removing all obstacles is not only necessary but also possible. Honorable Madam Speaker, I want to say something about this bill. That it shall come into effect after an exercise of deliberation is undertaken for this purpose. After that relevant figure for the first census is taken,
of this bill is undertaken. It doesn't specify the cycle of election for which women will get their due share. Rajya Sabha and State Legislative Council, the Rajya Sabha currently has lower representation of women than the Lok Sabha. Representation is an item that must be reflected from both of the houses. Sadly, the opposition is unable to digest this. And what is more shameful, and what is more shameful is without talkism, you did nothing for the women's reservation in the parliament. Honorable Speaker, ma'am, either they did legislate an escape or their friendly parties prevented the bill from being tabled. This double standard of the party has never been hidden, whatever stints they try to take the credit. Motion moved that the bill is passed. Those who are in favor of this bill, please say aye. Those against it may please say nay. I think the ayes have it, the ayes have it, and the ayes have it. The motion is adopted and bill is passed. The sense of collectivism is our real power. We have witnessed that we faced corona pandemic unitedly. As long as we are united, we can overcome any problem. The nation